Hello students, in this video we are going to discuss the topic subspace of a vector space V. Let's start with the definition first. Let V be any vector space over the field F. Whenever we use this notation like this or this, it is understood that all the 9 properties of being a vector space are satisfied by the elements of V. अगर बच्चे हम ये नोटेशन यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ऑलरेडी ये जो सेट V है ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर चुका है. एंड लेट S बी एनी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V. S हमने क्या चूज़ किया है? कोई भी एक रैंडम सबसेट. सबसेट मीन्स सब पार्ट ऑफ सेट V. Then S is said to be subspace of vector space V if S satisfies all the properties of being a vector space over same field F. That is, if the S is itself a vector space over the field F. अगर जो आपका सेट S आपने लिया ना, वो खुद भी क्या बन जाए, वेक्टर स्पेस बन जाए उस सेम फील्ड के लिए, तो हम S सेट को क्या बोल देते हैं? देन वी से S इज अ सब स्पेस. देखो पहले हमारे पास एक सेट है V, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स ने वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया है. मतलब जो हमारी 9 प्रॉपर्टीज़ होती हैं वेक्टर स्पेस के लिए, वो इस सेट V के लिए प्रूफ हमने कर दी है. अब एक हमने उसी सेट का V का क्या लिया है? सबसेट लिया है, सब पार्ट. अगर वो जो सबसेट लिया है वो 9 प्रॉपर्टीज़ को उसी सेम फील्ड के ऊपर सेटिस्फाई कर दे, तो उस सबसेट को हम क्या बोलेंगे? सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V. एंड इट्स नॉट लाइक दैट एवरी सबसेट इज गोइंग टू बी सबस्पेस. ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई भी सबसेट लिया और तो वो सबस्पेस होगा ही, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ हो सकती है दैट सिंस V is satisfying all the 9 properties and as its subset and S is the subpart of V, so this will also satisfy all the 9 properties, but this is not the case. I will explain you with an examples. देखो आपको लग रहा होगा कि V में अगर 10 एलिमेंट्स हैं, S उसका एक सबसेट लिया है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो V से ही तो लिए हैं, तो वो भी तो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे ही. बट दिस इज नॉट ट्रू. हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल. वी जस्ट प्रूव्ड इन द लास्ट वीडियो, इफ यू चेक देयर, दैट R is a vector space over the field Q. है ना, हमने प्रूफ किया ना, वी प्रूव दैट R is a vector space over the field Q. Now Z is a subset of R, set of integers, subset of real numbers. ये भी ठीक है ना. Now we also proved there that Z over Q is not a vector space. जो Z की अगर हम बात करें विद फील्ड Q के साथ, वो वेक्टर स्पेस है नहीं. अब आप देख सकते हो क्योंकि उसमें द प्रॉपर्टी विच वॉज सिक्स्थ प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वाज नॉट सेटिस्फाइड. है ना, ऐसा ही हुआ था. अब देखो ये वेक्टर स्पेस है R, बड़ा सेट, मीन सेट. रादर अगर उसके सबसेट की बात करें, द सेट विच इज सबसेट ऑफ R, दैट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई भी सबसेट ले रहे हो तो वो वेक्टर स्पेस बनेगा ही बनेगा. वी नीड टू चेक दैट वेदर S इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस. क्या वो खुद एक वेक्टर स्पेस है जो उसका आपने सब पार्ट लिया है? अगर वो खुद एक वेक्टर स्पेस है तो वो सब स्पेस बन जाएगा, अदरवाइज वो सब स्पेस नहीं होगा. Z इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. इट मीन्स Z is not subspace of R over the field Q. Now it's sometimes little bit time consuming, right, to check all the properties again and again, to check all the 9 properties for being a subspace or not. So rather than that, we use a result which says that if you need to check whether a set is subspace or not, na, result says that let V is any vector space over field F and S is any subset of V, then S is subspace of that vector space V over the field F if and only if alpha x plus beta y belongs to S for all elements x and y elements of S and for all alpha beta belonging to field F.
that rather than checking all the 9 conditions, just check this one equivalent condition. सारी 9 कंडीशंस चेक करने की बजाय हम क्या करेंगे, सिर्फ ये एक कंडीशन चेक कर लेंगे, बिकॉज दिस कंडीशन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू ऑल द 9 कंडीशंस. आप क्या करो, सिर्फ ये कंडीशन चेक कर लो दैट फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू एस, एस सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स चूज कर लो, अल्फा बीटा कोई भी दो स्केलर्स चूज कर लो, तो उनका ये जो लीनियर कम्बिनेशन है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, दिस शुड ऑल्सो बिलोंग टू सेट S. If this condition is satisfied, then we say S is a subspace, otherwise not. And one point more, when we are going to work on the examples, अब जैसे आप examples की बात करोगे ना, हमें एक वेक्टर स्पेस दे रखी है, S एक सबसेट दे रखा है, and we need to verify whether S is subspace or not. Before going to check this condition, always check first for the zero element. The zero element should belong to set S. That is, zero must be present in that subset. जीरो उस सबसेट के पास होना चाहिए. जीरो कौन है? ये जीरो वही जीरो एलिमेंट है जो हम वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज में प्रूव करते हैं. दिस इज सिंपली द जीरो एलिमेंट ऑफ दैट वेक्टर स्पेस. इफ यू रिकॉल द एग्जांपल, if we take the example of matrices, that is all the matrices which are of order 2, 2 cross 2 matrices की बात करें, then the zero element is the null matrix of order 2, so that should be belonging to that subset. Okay, so this zero doesn't simply mean that zero means zero element, or you can say the identity element of that vector space. जो zero element है वो उस subset में होना चाहिए. First check this condition, because sometimes this condition is not satisfied, that the subset is not containing the zero element, then there is no need to go for the second condition, which is alpha x plus beta y, because our question stops there. If zero doesn't belongs to S, then that subset S is never going to be subspace. वो subspace बनेगा ही नहीं. तो अगर आप examples में बात करो, numerical problems में, first of all check for the zero element, then check for this condition. If both of them are satisfied, then we say S is a subspace. If the first or the second, both of them are not satisfied, sometimes the first condition is satisfied but the second is not satisfied, so in either case the S set is not going to be the subspace. Now let's work on some examples. Example 1, let's say the vector space which is given to us is R4 over the field R. ये हमें vector space दे रखी है. R4 में क्या होता है? R4 means the 4 tuple elements x, y, z and t, where all of them are real numbers. This is the set R4, x, y, z, t, 4 tuple elements na. And let S be a subset of R4 defined as set S is those 4 tuple elements. Since S is also subset of R4 na, so it will be also containing 4 tuple elements such that its last element, this t, is always equals to 1. If we talk about some example like which type of elements are in S, S contains elements like, you can say 1, 2, 1, 1. That is the last element should be 1. Or we can have look at one more example like -4, 3, 0, 1. Basically they are asking that the last element should be 1. Only those elements are allowed in the subset S. S में वही elements आएंगे 4 tuple elements, सिर्फ जिनका जो last element है वो क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है. जैसे अगर ये element की बात करें हम 4, 3, 2, 7, ये S के अंदर नहीं जाएगा. This will not belong to set S. Why? Because the last element is not equals to 1 ना. Now coming back to our problem, so there was a vector space V which was R4 and the subset S such that the last element should be 1, and we need to check whether this set is subspace or not. Now first we check this condition, that is zero element, not the zero. Now what is zero element of R4? 0, 0, 0. Now is this in set S? No, this is not in set S. Why so? Because the condition is that the last element should be 1, but what's here? 0. Since this does not belongs to set S, our question simply stops there, that S is not a vector space. There is no need to check the second condition. क्वेश्चन हमारा वहीं पे ख़त्म हो जाता है कि ये सेट जो है वो वेक्टर स्पेस है ही नहीं. और अगर आप स्टार्ट कर भी देते हो, लेट्स स्टिल यू मूव टू द कंडीशन नंबर 2,
this condition is not going to be satisfied because of the failure of this first condition. Let's have a look at one more example. Now in this case, let's consider the example V, which is again R4 over the field R, and the subset S is given as those four tuple elements S is equals to A, B, C, D, such that A plus B is equals to 0 and C is equals to 2D. These type of elements are permitted in the set S, and again we need to check whether S is subspace or not. We have to check S is subspace or not. ये हमने अभी चेक करना है कि ये subspace है कि नहीं है. So first of all we will check the zero element. Now zero element of R4 is mentioned here. Now see, is this belongs to set S? What is the condition? Sum of first two should be 0. The third element should be double of the fourth one. And you can see this is A, this is B, A, B, C, D. 0 plus 0, 0, satisfied. 0 is equals to 2 times of 0. Yes, that's also satisfied. So this element is clearly belonging to the subset S. Now let's move to the second condition. For that, choose two scalars alpha and beta from the field R and two vectors from the set S. दो vectors choose कर लिए हमने. Since x belongs to set S, it means x is going to be something like x1, x2, x3, x4, such that sum of first two is 0 and x3 is equals to 2 times of x4, and similarly let y is equals to y1, y2, y3, y4, such that y1 plus y2 0 and y3 is equals to 2 times of y4. यही कंडीशंस होगी ना. अगर x और y s को बिलोंग करें मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी. दीज टू विल बी सेटिस्फाइड बाय x and y. नाउ व्हाट वी नीड टू चेक alpha x plus beta y, their linear combination. Consider alpha x plus beta y. Put the value of x and y, x1, x2, x3, x4, beta y1, y2, y3, y4. Simplify them, multiply alpha inside, then multiply beta inside, add first element in the first one, second in the second one. So what we will get here, I am going to skip those two steps. I am simply writing the alpha x1 plus beta x1, beta y1, alpha x2 plus beta y2, alpha x3 plus beta y3, alpha x4 plus beta y4. So this is the four tuple element we have, and we need to verify whether this is an element of S or not. Now what's the condition? That what should be the requirement so that this element belongs to set S. अब इसको S के अंदर लेके जाना है तो क्या होना चाहिए? For that, sum of these two should be 0 and the third one should be double of the fourth one. Now let's check that. Now consider sum of first two, alpha x1 beta y1, alpha x2 beta y2. How we can write them? Alpha x1 plus x2, a little bit of simplification, combining first and third term, second and fourth. Now what is the value of x1 plus x2? 0. y1 plus y2, 0. Put here alpha times of 0, beta times of 0, which gives us 0. It means sum of first two is giving us 0. First condition is satisfied, this one. Now we need to check the second condition. For second condition, we will consider the third element, alpha x3 beta y3. Now what is the value of x3? The value of x3 is 2x4 and value of y3 2y4. Value of x3 is 2 times of x4. Value of y3 is 2 times of y4. Take 2 common, alpha x4 plus beta y4. Now you can see alpha x3 plus beta y3 is equals to 2 times of alpha x4 beta y4. Second condition भी satisfy हो गई. It means alpha x plus beta y belongs to set S for all xy elements of S and alpha beta belonging to field F. Property satisfied. It means S is subspace of vector space V over the field F. I hope it's clear to everyone now.
Still, for any queries, do let me know. We will cover them in the next video. Thank you.